Hello बच्चों, let us read the question. A particle executes simple harmonic motion with a frequency f. The frequency with which its kinetic energy oscillates is option A f by 2, option B f, option C 2f, option D 4f. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन. So simple harmonic motion is a kind of periodic motion where we have जहाँ पे एक रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो किस तरह के फोर्स है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. To displacement. So therefore we can say that F is directly proportional to नेगेटिव x. अगर हम वन डायमेंशन में ले रहे हैं, नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रेस्टोरिंग फोर्स है. तो डिस्प्लेसमेंट अगर राइट को है तो फोर्स it will bring the displacement, it will bring the object back to its position by acting in the opposite direction. So this is why there is a negative sign. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम let us see what is given. Frequency of oscillation वो है f. So let हम displacement को we will write the displacement as a sinusoidal periodic function a sin omega t, जहाँ पे a amplitude है, omega is the angular frequency. So अभी हम velocity को calculate करेंगे. So we know that v is equal to dx by dt. So when we take the differential of x, we get a omega cos omega t. So now we can calculate, we can calculate the kinetic energy. Let m be the mass of the object. तो उस oscillating object का kinetic energy हम half mv squared लिखेंगे. So this will be half m into a squared omega squared cos squared omega t. तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से ये जानते हैं कि cos squared omega t can be written as 1 plus cos 2 omega t divided by 2. So therefore the kinetic energy, अभी हम लिखेंगे kinetic energy को half m a squared omega squared into 1 plus cos 2 omega t divided by 2. ये 2 को हम बाहर लेंगे. So this becomes 1 by 4 m a squared omega squared into 1 plus cos 2 omega t. तो अभी हम देख रहे हैं कि कोसाइन के टर्म में the omega value is 2 omega. So omega in the cosine is equal to 2 omega. मतलब 2 pi f kinetic energy is equal to 2 pi f in 2 pi 2f. 2 pi cancel. So therefore the frequency of oscillation of the kinetic energy will be 2 times f. तो अभी हम क्वेश्चन पे जाके करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे. The frequency with which its kinetic energy oscillates is 2f. The correct option is option C. Hope you have understood it well. Best of luck.